I'm currently on a very hot and humid Phu Quoc Island in the south of Vietnam, and I'm about to have a hot bowl of pho. This setting could not be more different from the last time I had pho, which was on a very cold and rainy morning in Hanoi in the north of Vietnam. It wasn't just the setting that was different. In this video, I'll share my thoughts on how Vietnam's national dish is quite different in the south as compared to the north. Keep on watching for my first time having southern style pho and also for some thoughts on how it differs from northern style pho in Vietnam. आज पूरा दिन ही मेरी थोड़ी सी सी फूड से बस हुई थी एंड मैं दुआ कर रही थी अल्लाह मियाँ से कि मुझे हलाल मिल जाए कहीं पे एंड लुक फॉर आई जस्ट फाउंड थोड़ा सा टाउन सेंटर से हट के देयर इज दिस रेस्टोरेंट एंड लुक एट दिस and they have the best part is it's not random Turkish या Middle Eastern खाना. They have proper Vietnamese in halal form और cute सा भी है. It looks really nice. थोड़ा सा टाउन सेंटर से हट के मैं बाइक पे जा रही थी अपने भाई के साथ और रास्ते में मेरी इस पे नज़र पड़ी. Let's go have food and I think I'll also get something chicken because I'm really craving chicken. रेस्टोरेंट इतना क्यूट है एंड काफ़ी खाली पड़ा हुआ है. मुझे लगता है बस माई ब्रदर एंड आई विल बी दी ओनली पीपल हेयर. ओह दे हैव वियतनामीज एंड मलेशियन फूड बोथ. दैट्स गुड. सीन ये है कि मैंने अब ऑलमोस्ट एक हफ्ते से चिकन नहीं खाया हुआ और जो आज सुबह मेरे साथ तो इंडियन फूड वाले रेस्टोरेंट पे हुआ था, अब मैं कुछ चिकन में भी मंगवा रही हूँ बिकॉज आई एम रियली क्रेविंग चिकन. सो माई ब्रदर एंड आई हम डिफरेंट टेबल्स पे बैठे हैं बिकॉज मैंने व्लॉग करना है एंड ही इज़ गेटिंग रियली अनॉयड बाय मी. सो मैं इधर बैठ के खाऊंगी एंड माई ब्रदर इज़ गोना सिट वेयर एंड ईट. पूरे आइलैंड पे आई थिंक टोटल 2 हलाल रेस्टोरेंट्स हैं. एक बिल्कुल आइलैंड के दूसरे एंड पे जहाँ जाना ईजिली 2 घंटे आपको लग जाएगा. इफ़ यू स्टेइंग इन द सिटी सेंटर इट विल टेक यू 2 hours टू गेट टू दैट साइड ऑफ द आइलैंड. एंड दूसरा ये दिस वन इज़ अबाउट 15 to 20 minutes car ride from the center of town. Pho ba is beef and pho ga is chicken. So I guess, oh wow, this is really helpful. This menu कुछ समझ नहीं आ रही. Fried chicken wings, fried chicken thighs. ये तो मैं पैक करा के साथ लेके जा रही हूँ. They have what is this? What? ये ayam तो मुझे कुछ मलेशिया से याद है. Oh, because they say authentic Vietnam and Malaysian. I think ayam is chicken if I'm correct. Ayam goreng. I think goreng was fried chicken. जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है मलेशिया से. अच्छा, I've decided I'm getting the beef pho and I'm getting fried chicken because chicken खाना है, गोश्त खाना है. आज पार्टी होने लगी है. Guys, my food is here and it looks so good. Oh my god. और इनका फ़ो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. आई बीन टोल्ड नॉर्थ और साउथ में थोड़ा सा फ़र्क है. इन्होंने कॉन्डिमेंट सेपरेटली थोड़े ज़्यादा दिए हैं. इन्होंने ग्रीन्स भी सेपरेटली डाले हैं. जो मैंने हनोई में खाया था उसमें ग्रीन्स इसमें इंक्लूडेड थे. उन्होंने चिलीज़ भी साथ में एक्स्ट्रा दिए हैं एंड दे हैव गिवन सम ड्राई चिली फ्लेक्स. लाइम वेज उन्होंने भी दिया था. आई थिंक आई विल हैव अ सिप ऑफ इट पहले विदाउट द कॉन्डिमेंट्स. इट्स स्वीट, थोड़ा मीठा है. Oh, it's quite different. Let's add the condiments because मुझे लग रहा है कि मैं as it is नहीं खा सकूँगी. I need to I'm not saying it's bad, but I want it spicy and lemony. तो सबसे पहले I'm gonna add these chili flakes. Guys, it looks so good.
अब मैंने इसके अंदर सारे कॉन्डिमेंट्स डाल दिए अपनी मर्ज़ी से एंड आई एम गोइंग टू टक इन. Okay, they knew what they were doing when they served the condiments with it. With the condiments, it's now sweet and spicy and lemony. ज़्यादा well-rounded है, I would say, as compared to the Hanoi wala. That broth, you could instantly taste the star anise and the cinnamon. इसमें the first thing you tasted was sweetness, मिठास. मेरे ख्याल में मुझे chopsticks छोड़ देना चाहिए. I will not embarrass myself. Good old fork, it is. इसी में ठीक हूँ मैं. गाइज ये वाला जो ग्रीन है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द basil. ये तो इट टेस्ट लाइक रेगुलर basil एंड दिस थिंग जस्ट टेस्ट लाइक माइल्डर वर्जन ऑफ पालक. इतनी स्ट्रॉन्ग पालक वाला टेस्ट नहीं है इसमें. They've just brought me my takeaway food, which is chicken, fried chicken and chips, and they've also given this complimentary drink, which is like some green tea but chilled. It's like chilled green tea. It's really nice. And really nice of them to give this complimentary. This is Sri Mutiara Restaurant Halal Foods. And this is in Duangdong district. Duangdong, which is the center of town in Phu Quoc Island. Just some final thoughts on the pho. I think जिस तरह हमारी लाहौर versus Karachi की there's this whole rivalry with biryani, with pulao, with so many dishes. I think these guys also have it because someone here told me that it's not actually Phu Quoc जिसका के competition है with Hanoi. It's actually Ho Chi Minh. It's not like a competition, but it's more of a हमारा तो काफ़ी serious है biryani wars and although के कराची की बिरयानी ही is the real बिरयानी. लाहौर में बिरयानी अच्छी नहीं मिलती. लाहौर is more of a pulao place. इधर I can't really say किसका ज़्यादा अच्छा था. They both had their own vibe. I personally think both the Hanoi version, the north version and the south version have been nice. मैंने अभी सिर्फ Phu Quoc पे खाया, which is like a smaller town. It's an island in the south. Maybe it's not Karachi versus Islamabad when you do Phu Quoc versus Hanoi. ज़्यादा accurate comparison would be Ho Chi Minh versus Hanoi. Phu Quoc is more of like इनका गवादर समझ लें आप, जो कि अभी एक न्यू टूरिस्ट स्पॉट है जो कि अभी डेवलप हो रहा है. एंड फाइनली ये जो मैंने वहाँ से टेक अवे कराया था, द फ्राइड चिकन एंड द फ्रेंच फ्राइज, शुक्र है ये वो बाद में लाए थे, क्योंकि अगर फर से पहले ले आते तो शायद मैं पहले यही खा लेती और फर मेरा ज़ाया हो जाता. टुमारो आई एम हेडेड टू स्टारफिश बीच विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ दिस आइलैंड. एंड वहाँ पे खाने का थोड़ा सा इशू होगा. फ्राइज़ मैं थोड़े से अभी खाऊंगी, थोड़े से सुबह में फ्राइज़ खा लूँगी. I'll put these overnight in the fridge और कल इनको मैं निकाल दूँगी. About 2 hours की मेरी जर्नी होगी to Starfish Beach. It'll have plenty of time to come back down to room temperature. It won't be fully cold. I think this will be good picnic food to take along. वहाँ पे seafood मिलता है, but मेरी थोड़ी सी बस हुई है seafood से. I hope you guys have been enjoying these Vietnam vlogs. If you have, please subscribe and do like and comment below. I'll try and share a few clips from Starfish Beach. I'll just be taking my food along and just enjoying the beach vibes. और फिर मैंने थोड़ा बहुत बाकी जो island है उसका tour करना है on bike with my brother. तो खाने का कल कुछ इतना सीन नहीं होगा. I don't think I'll be eating anything new.